Hello and welcome to my channel. I'm Madhurima Sharma and today I'm going to talk about hypothesis. So let's start. So what is hypothesis? A hypothesis is a precise testable statement of what the researcher predict will be the outcome of study. So you have to predict the hypothesis in advance. Hypothesis can be defined as a tentative proposition suggested as a solution to a problem or as an explanation of some phenomenon. Hypothesis is a formal statement that presents the expected relationship between an independent and dependent variable. As we know, when we have to study any problem or any research we are conducting, for that we need to define the relationship between the independent and dependent variable. What is the effect of the independent variable on the dependent variable? So there must be some relationship between. So at its most basic, we can say that research hypothesis is what the researcher expects to find. It is a tentative answer to a research question that guides the entire study. Now, hypothesis makes the following contribution in a research study. Why hypothesis is important? What are the contributions? So it provides the clarity to the research problem and research objective. हमें actually अपने research में करना क्या है? It provides the clarity. It describe, explains or predict the expected result or the outcome of the research. ये already advance में predict कर लेता है. It indicate the type of research design. हमने research design के बारे में already discuss किया हुआ है. So it actually indicates कि हमें कौन सा research design इस particular research के लिए चाहिए. It directs the research study process. It identifies the population of the research study that is to be investigated or examined. ये हमें बताता है कि actually हमारे research study के लिए कौन सा population चाहिए. It facilitates the data collection, data analysis and data interpretation. Okay. Next is what are the characteristics of a good hypothesis. So hypothesis should be simple, specific, stated in advance. It must have the explanatory power. As we know, it is actually explains the relationship between the dependent and the independent variable. So it must explain that. It must have the explanatory power. It must state the expected relation between the variables and it must be testable because we are actually expecting the hypothesis in advance, so it must be tested that on in future, then only we can get the result. It should be consistent with the existing body of the knowledge. Next is these are the types of hypothesis: simple, complex, empirical, null hypothesis, alternative hypothesis, logical and statistical hypothesis. So let's discuss it one by one. What is simple hypothesis? So it is a prediction of a relationship between the two variable, independent and dependent variable. So it is very simple. Just we have to find out what is the relationship between the two variable. One is independent and one is dependent. Like drinking sugary drink daily leads to obesity. It's very simple ना. अगर हम daily sugary drink पीते हैं तो it will lead to obesity. So only one independent and one dependent variable is here. Now what is complex hypothesis? It examines the relationship between two or more independent variable and two or more dependent variable. That is why it is complex. यहाँ पे हमने दो से ज़्यादा independent variable और दो से ज़्यादा dependent variable के relationship को examine करना है. For example, eating more vegetable and fruits led to weight loss, glowing skin, reduces the risk of many diseases such as heart disease, high blood pressure and some cancers. So you can see here so many dependent and independent variables are here and we have to know what are the relationship between the variables. Now next is empirical hypothesis. Empirical hypothesis is also called as working hypothesis and it comes to life when a theory is being put to test using observation and experiment. हमने क्या करना है? थ्योरी को अब टेस्ट करना है अपने ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट से. एग्जाम्पल देखते हैं. Roses watered with a liquid vitamin B grow faster than the roses watered with liquid vitamin E. यहाँ पे क्या करना है? हमने ट्रायल एंड एरर मेथड से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप हमें एग्जामिन करना है कि हमने जब रोजेस को विटामिन बी दिया तो वो इजीली ग्रो कर रहा है और एज कंपेयर टू
अब जब हमने विटामिन ई दिया तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रायल एंड एरर इज लीडिंग टू अ सीरीज ऑफ फाइंडिंग. एम्पेरिकल. लॉजिकल हाइपोथेसिस क्या होता है, इट प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन पॉजिंग लिमिटेड एविडेंस. हमारे पास बहुत ही लिमिटेड एविडेंस है. अब जैसे कैक्टस इज हैविंग अ सक्सेसफुल ग्रोथ रेट देन ट्यूलिप ऑन अ मार्स, तो इज़ इट पॉसिबल कि हमने वहाँ जाके मार्स के ग्राउंड को हमने टेस्ट किया है कि हाँ यहाँ पे कैक्टस जो इजीली यहाँ पे ग्रो होगा एज कम्पेयर टू ट्यूलिप. सो हियर the plant growth in Mars ground for extended period of time, the evidence for this claim will be limited. यहाँ पे limited and a hypothesis will only remain logical. So what we actually do, we want to turn logical hypothesis into empirical and then putting all the theories and postulation to the test. तो हमने empirical hypothesis में क्या किया, ट्रायल एंड एरर मेथड से हमने उसे उसको एक्सपेरिमेंट किया था. और यहाँ पे लॉजिकल हाइपोथेसिस में क्या करना, लॉजिकल को हमने टर्न करना है एम्पेरिकल में, देन ट्रायल एंड मेथड यूज करना. नेक्स्ट इज व्हाट इज स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस. स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज द एग्जामिनेशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन. अब किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को हमने स्टडी करना है, देन हाइपोथेसिस डेवलप करना है. सो इफ वी वांटेड टू कंडक्ट अ स्टडी, ये एक एग्जाम्पल है, इफ़ यू वॉन्टेड टू कंडक्ट अ स्टडी ऑन अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ अ XYZ एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया को हमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी स्टडी करना, यू वुड वॉन्ट टू एग्जामिन एंटायर सिंगल रेसिडेंस ऑफ XYZ. अब हम सारे हर एक के मतलब एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हम लोग मेज़र नहीं कर सकते, एग्जामिन नहीं कर सकते. सो व्हाट वी डू, वी वुड कंडक्ट our research using a statistical hypothesis or a sample of a XYZ population. हमने sample draw करना है, then we will develop the hypothesis. Now the most important hypothesis, the type of hypothesis is null and alternative hypothesis. Now first of all, अभी तक जो हमने पढ़ा, हमने देखा कि जो hypothesis है, it must explain what we want, what we expect to happen. It must be clear and understandable. It must be testable, measurable, and it must contain an independent and dependent variable. अब हम लोग पढ़ेंगे what is null and alternative hypothesis. So what is null hypothesis? Null hypothesis is a statement that there is no actual relationship between variables. कोई भी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल इज नॉट देयर. लाइक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड डिपेंडेंट वेरिएबल है, दोनों में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता. एंड इट स्टेट्स द ऑपोजिट ऑफ व्हाट एक्सपेरिमेंटर वुड एक्सपेक्ट और प्रेडिक्ट. जो भी एक्सपेरिमेंटर एक्सपेक्ट करता है कि ये होना चाहिए, जो भी अज्यूम करता है उसके जस्ट ऑपोजिट होता है. द फाइनल कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर विद ईदर retain a null hypothesis or reject a null hypothesis in favor of an alternative hypothesis. जो भी इन्वेस्टिगेटर हाइपोथेसिस डेवलप करता है और फाइनल जो कंक्लूजन होता है जो भी रिसर्चर का, या तो वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करता है या एक्सेप्ट करता है, देन ओनली ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के फेवर में. ना एक बार फर्स्ट हमने नल हाइपोथेसिस को स्टेट कर लिया, now it is very easy to construct the alternative hypothesis. So what is null hypothesis? It states that there is a no relationship between the two variables. That means one variable does not affect the other, and it is very important how it may be read, like there is a no difference between. Okay, now here examples you can see. Cat show no preference for food based on shape. अब उसे आप ट्राइंगल शेप का फूड प्रोवाइड करो, फिश शेप का फूड प्रोवाइड करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंड देयर इज अ नो रिलेशनशिप बिटवीन. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज प्लांट ग्रोथ इज नॉट अफेक्टेड बाय लाइट कलर. अब वट एवर द कलर ऑफ लाइट, द ग्रोथ इज सिमिलर. Next is age has no effect on a musical ability. Whatever the age of a person, the musical instrument they play are of the similar. So the null hypothesis assumes there is a no relationship between the two variable and that controlling one variable has no effect on the other. मतलब independent variable का dependent variable पे कोई effect नहीं होगा. Now what is alternative hypothesis? An alternative hypothesis is the statement that suggests a potential outcome that researcher may expect.
जो रिसर्च ने एक्सपेक्ट किया है, दैट इज ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड व्हेन अ नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड. हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है, देन इट विल एस्टैब्लिश. Often an alternate hypothesis is the desired conclusion of the investigator. Okay, now we have two type of alternative hypothesis, directional and non-directional. तो what is, यहाँ पे आपको समझ में है alternate hypothesis क्या है? It states that there is a relationship between the two variable being studied. Relationship between, that means one variable has an effect on the other. Now एग्जाम्पल ऑफ ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एंड नल हाइपोथेसिस, यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आएगा. यहाँ पे है द इफेक्ट ऑफ बायो फर्टिलाइजर एक्स ऑन प्लांट ग्रोथ. यहाँ पे आप देखो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या होगा, इसने अज्यूम किया दैट व्हेन वी अप्लाई द बायो फर्टिलाइजर एक्स इट विल इंक्रीज द plant growth. That means there is a relationship between the fertilizer, the bio fertilizer and the plant growth. And यहाँ null hypothesis में क्या हुआ, आप इमेज में देख सकते हो कि when we apply the X, that is bio fertilizer on the plant, the growth will be the same. तो यहाँ पे कोई relationship नहीं है. Now the types of the alternative hypothesis, directional hypothesis. Directional hypothesis specify the direction of the expected finding. एक particular direction में होता है. Directional hypothesis predict the nature of the effect of independent variable on a dependent variable, and it is read as is more than or will be lesser. For example, adult will correctly recall more word than children. अगर हमने एक एडल्ट को 10 वर्ड्स हमने याद करने के लिए दे दिया एंड 10 चिल्ड्रन को हमने 10 वर्ड्स दे दिया मेमोराइज करने के लिए, तो और जब हमने उसको रिकॉल करवाया तो हमारा जो रिजल्ट आता है, द एडल्ट विल करेक्टली रिकॉल मोर वर्ड दैन द चिल्ड्रन. दिस इज डायरेक्शनल, वेरी सिंपल. और नॉन डायरेक्शनल में क्या होगा, देयर विल बी अ डिफरेंस इन हाउ मेनी वर्ड्स are correctly recalled by children and adults. So this is non-directional, in which no definite direction of expected finding is specified, and the researcher may not know what can be predicted from the past literature, and it may read like there is a difference between, or there is a no difference between. And non-directional hypothesis predict that the independent variable will have an effect on dependent variable, but the direction of the effect is not specified. इसीलिए यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, there will be a difference in how many numbers are correctly recalled by children and adult. और directional में आप देखो adult will correctly recall more word than the children. एग्जाम्पल से it is very clear कि what is directional and what is non-directional hypothesis. Now अभी अगर आपको समझ में आ गया है what is null and alternative hypothesis, now we can differentiate and you will understand more. Null hypothesis is a statement in which there is a no relationship between two variables. An alternative hypothesis is a statement in which there is some statistical significance between the two measured phenomenon or a two variable. Next is what the researcher tries to disapprove, and an alternative hypothesis, it is what the researcher try to prove. Null hypothesis हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं HO, और alternative hypothesis हम लोग H1 और HA. Null hypothesis is a statement about a population parameter. An alternative hypothesis is a statement that directly contradicts the null hypothesis. क्योंकि हमने उसे रिजेक्ट किया तो फाइनली हमने alternative hypothesis को एक्सेप्ट किया. So it contradicts it is actually opposite of that. Null hypothesis reflects that there will be no observed effect in our experiment. An alternative or experimental hypothesis reflects that there will be an observed effect for our experiment. So the first and last is similar. Next, now अब ऐसे कौन सा रिसर्च है विच इज़ एक्चुअली विदाउट हाइपोथेसिस, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड इंटरप्रिटेटिव रिसर्च. सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. इट इज़ इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आर बेस नॉलेज ऑफ अ सब्जेक्ट मे बी सो लो दैट वी कैन नॉट फॉर्मुलेट मीनिंगफुल हाइपोथेसिस. हमारे पास उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हमने तो ऑलरेडी उसको एक्सप्लोर करना है.
इसलिए इसमें हाइपोथेसिस डेवलप ही नहीं कर सकते. Exploratory research should be guided by a clear sense of purpose. Instead of hypothesis, the design of the for the exploratory study should state its purpose. उसमें आप purpose state कर सकते हैं, और a research objective, as well as criteria by which the exploration will be judged successful. Next is interpretative research. इसमें भी hypothesis development important नहीं है, which seeks to develop knowledge through understanding meaning and does not usually proceed with hypothesis. So exploratory research and interpretative research is without hypothesis. I hope you like this video. Like, subscribe, share and comments if you have any doubt. Thank you so much.